ン、クワリリオン、トゥインティリオン、セクスティリオン、セプティリオン、モクティリオン、ノニリオン、リシリオン、アンリシリオン、リュオディシリオン、グーゴール、ブラジル、アルゼ人、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア、チリ、ペル、エクアドル、仏領、ギアナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビア、南米、バイデン、マクロン、メローニ、エルド、アドルド、シュユン、ラマコーザ、アルバニージ、ジョコスナクプチモディ、サルマン、ショルツル、ウラキシダ、デカヘクト、キロメガ、ギガ、テラ、ケータ、エクサ、ゼタ、ヨタロ、ナクエタ、デシセジ、ミリ、マグロ、ナノ、ピコ、ヘムト、アトデクト、ヨクト、ロドク、エクト、アルファベタ、ガンマ、デルタ、イプシロン、ゼタ、イタ、シタ、ヨタ、カッパ、ラムダ、ニュニュク、サヨ、ミクロン、パイロ、シグマ、タウ、ウプシロン、ハイ、カイプ、サイ、オメガ、ワテン、ハンデ、タウ、ザド、ミリオン、ミリオン、トリオン、クワリリオン、トゥインティリオン、セクスティリオン、セプティリオン、モクティリオン、ノニリオン、リシリオン、アンリシリオン、リュオディシリオン、グーゴール、ブラジル、アルゼ人、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア、チリ、ペル、エクアドル、仏領、ギアナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビア、南米、バイデン、マクロン、メローニ、エルド、アドルド、シュユン、ラマコーザ、アルバニージ、ジョコスナクプチモディ、サルマン、ショルツル、ウラキシダ、デカヘクト、キロメガ、ギガ、テラ、ケータ、エクサ、ゼタ、ヨタロ、ナクエタ、デシセジ、ミリ、マグロ、ナノ、ピコ、ヘムト、アトデクト、ヨクト、ロドク、エクト、アルファベタ、ガンマ、デルタ、イプシロン、ゼタ、イタ、シタ、ヨタ、カッパ、ラムダ、ニュニュク、サヨ、ミクロン、パイロ、シグマ、タウ、ウプシロン、ハイ、カイプ、サイ、オメガ、ワテン、ハンデ、タウ、ザド、ミリオン、ミリオン、トリオン、クワリリオン、トゥインティリオン、セクスティリオン、セプティリオン、モクティリオン、ノニリオン、リシリオン、アンリシリオン、リュオディシリオン、グーゴール、ブラジル、アルゼ人、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア、チリ、ペル、エクアドル、仏領、ギアナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビ
गाने में स्ट्रीम करे कैम नहीं आएगा आज 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 क्या आज कहानी होगी मेरे साथ। आज मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा। आज मेरा मुँह काला हो गया। आज मैंने मुँह काला करा दिया अपना। क्या आवाज नहीं ड्रिंक से फुल वॉल्यूम करके बात कर। हेलो हेलो 1 2 3 फुल वॉल्यूम है क्या? फुल वॉल्यूम फुल वॉल्यूम। हेलो अब ठीक है। अरे मैंने मुंह काला कर दिया ना अपना इसलिए। बताना क्या हुआ? अरे हाँ मुंह काला कर दिया मैंने अपना। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? कुछ ब्लॉग डाला, बस एक ब्लॉग था वही पुराना चल रहा है, अभी ब्लॉग डालना है उसके अंदर। उसमें ब्लॉग क्लियर फोन नहीं लिया था अपना, फोन लिया तो बात है। फोन लिया था मैं अपना, फोन लिया तो रिकॉर्ड पाऊंगा कुछ। एक और फोन ले पड़ेगा वो एक्स्ट्रा बात में। पापा पापा बोल के ले पड़ेगा। पर फोन से जो अच्छा सोच रहा हूँ मैं ना, ग्राफिक कार्ड ले लूँ तो अच्छे गेम खेल पाऊंगा थोड़े और, मतलब वैलोरेंट वगैरह खेल पाऊंगा ज़्यादा। तो देखता हूँ यार, फोन ले ग्राफिक कार्ड ले क्या ले, कोई पैसे कमाए तो बजाए। अरे पता है गाँव गाँव गया था तो ना मधुमक्खी ने काट दिया मेरे आंखों पे और हाथ पे। ओनली कैसे डाल गया वैलोरेंट डालता ना, वैलोरेंट की वो डालना शॉर्ट्स। माइनक्राफ्ट बिल्कुल खत्म कर दिया क्योंकि ना माइनक्राफ्ट तो मेरा सर्वर चल नहीं रहा है। अब नया सर्वर बनाऊँ तो उसमें और यार वो उसका उसका प्राइवेट सर्वर का इशू आ रहा है। अब मैं एटोनस बना दूँ भले वो इशू है, पर देखता हूँ यार। लेकिन लेकिन इतना तो तू वीडियो देखा ना, वीडियो बनाई मैंने टॉम रेडी देखी नहीं तूने? तो एक तो मैंने बोला था तुमने देखी, दूसरा देखी तूने? देखी नहीं होगी, कैसा आदमी है। क्या वीडियो में बनाता हूँ ना टॉम रेडर की। इसके मैं वो कहाँ से ऑप्शन था कि हम कैरेक्टर। चलो कौन देख रहा है टॉम रेडर? अबे पागल स्टोरी वीडियो ना इसलिए, तो तुम देखेंगे ना स्टोरी वीडियो इसलिए। मल्टी एलिमेंटल डैमेज ऑफ बो कैरेक्टर सिंगल। ओके बो कैरेक्टर ना भाई, कुकी बिल्ड जीते थे बो कैरेक्टर इसमें काम आता है ये ला। इसमें ये टीम होती है पता है, मैं टीम कौन तुम्हें पता है ना, ये टीम होती है एक में ठीक है। और इसमें टीम होती है लूनर ब्लू वाली, ये हो जाती, ये हो जाती, ये हो जाती, और एक और डाल देता और उसमें फिर इसमें नूबी टीम होती है ना। इसमें ब्लूम बोल रहा है, इसमें ब्लूम बोल रहा है, इसमें हैप्पी ब्लूम बोल रहा है, नहीं इसमें इसमें इलेक्ट्रो चार्ज बोल रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रो चार्ज बोल रहा है, उसमें ब्लूम बोल रहा है। कुकी बिल्ड करनी पड़ेगी और ना इस वाली टीम को ले जाए फिर हाइड्रो प्लेयर। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है?
अरे सब्सक्राइब किया किसी ने बट आया क्यों नहीं मेरे को? एक मिनट दिखा भी नहीं मेरे को। अच्छा मैंने हाइड कर रखा, शिट। अरे थैंक यू सो मच जिसने सब्सक्राइब किया बट मुझे दिखा नहीं, सॉरी ना। वीडियो कैप्चर हटाओ, इमेज ये तो अच्छा ये इमेज यूज कर लिया। अलर्ट मैंने अलर्ट भी ऑफ कर रखा है, सब गोल ठीक है। अरे यार किसी ने सब्सक्राइब किया मुझे देखा नहीं, सॉरी यार गाइस, मेरा वो ऑफ था। ये देखता हूँ मैं, कुछ करता हूँ, रुक जाओ। चैट भी मैंने हटा रखी है, ठीक है। वो करना अटर्नल करो ना, वही सोच रहा मैं। सब गोल्ड डोनेशन ऑन रखना है, और इमेज तो ऑफ है, इमेज स्लाइड शो भी ऑफ है, इमेज ऑफ है, वीडियो कैप्चर ऑफ है, ठीक है। ये सब ऑन रखना था मेरे को, गलती ऑन नहीं रखा। जितने सब्सक्राइब थैंक यू सो मच यार। दिखा नहीं होगा मेरे को, आई एम सॉरी। अंधा हूँ मैं थोड़ा सा, मेरे आंखें अभी ना क्या ना, मैं गाँव से आया हूँ तो मेरी मक्खी काट गई है, मेरी आंखें फूल रखी है तो मेरे को दिख नहीं रहा है। डायरेक्टर दिख रहा है बट वो डायरेक्टर का नहीं है, वो किसी और ने कर रखा है। डायरेक्टर ने पहले कर सब्सक्राइब। जो लेटेस्ट वाला उसका नोटिफिकेशन हटा रखा मैंने, तो दिखाई नहीं, वो पता है वो यहाँ पर उसका नाम है सीधा। चलो बात नहीं, अभी एक गेम का चलता है, गेम का चलता है ना, हाँ गेम का चलता है, ओके ठीक है। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब ना देखो, इसके लिए मेरे को एक इलेक्ट्रोनिक कैरेक्टर चाहिए। अब इलेक्ट्रो का लो, देखो लेटेस्ट मेंबर स्टेट। हाँ उसने सही मेंबरशिप ली ना, इसलिए उसने मेंबरशिप ली है। एंड्रू टेट ने मेंबरशिप लिया। वन राग नाम है उसका, एंड्रू टेट लिखा उसको एंड्रू टेट लिखता है। मेरे पास एक और इलेक्ट्रोनेटर नहीं ऑफ फील्ड ना, किचिंग कचिंग काम की नहीं कचिंग। तो फिर मैं इसमें ब्लूम रिएक्शन लूँ, उसमें हाइपर ब्लूम ऐसा ले लेता हूँ, तो हो जाएगा काम कुछ। मेन कैरेक्टर ले, अभी मेन कैरेक्टर चूमा भाई, मेन कैरेक्टर ये मेन कैरेक्टर है, कुछ काम का ही नहीं, कचरा। इसको बिल्ड करना पड़ता है, और डैमेज ही कम देता है घर आ गई नूब। एक काम करते ना, अभी अभी ये मोड नहीं करता, दूसरा मोड कौन सा था? मैनेसिंग, ये तो मैनेसिंग कर रहा हूँ मैं, और वो कहाँ चेंज करते मोड? यहाँ कहाँ से? यहाँ से मैनेसिंग कर रहा हूँ मैं, हार्ड करते ना। अरे हार्डवेयर कैरेक्टर चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा ना? अच्छा हाँ, एक ही टीम लेते इसलिए। हाँ भाई दिव्यांश, थैंक यू सब्सक्राइबिंग। दिव्यांश मेरा एक फ्रेंड भी दिव्यांश, उसका नाम दिव्यांश है। दुआ नहीं ले सकते? हाँ उसमें नहीं ले सकते ना, वो जो मैं हार्ड लग रहा हूँ उसमें ले सकते, इसमें ले सकता हूँ। इसमें तो ले सकता हूँ, इसमें ना कहाँ है? इसमें ये लूँगा, ये लूँगा, और एक चौंगली लेता हूँ ना। चौंगली कहाँ? चौंगली लेते पहले, चौंगली फिर ये फिर ये हो जाएगा। फिर फ्रेंड का नाम भी दिव्यांश कॉमन नेम है ना। अब चेंज हो गया, अब लेटेस्ट वाला चेंज हो गया। बड़ा विकेल है तो है विकेल, नहीं सब क्या विकेल नहीं होते। अरे शिट, Solidify! Emerge right now. Stay put. अरे इधर घूमना, इधर घूमो, सब इधर घूमो। देखिए मैं आ नहीं पाया आफ्टर पे भी, Right फिर मैं here. नूब शिट। Emerge. Gather! Yeah! Right! Stabilize! Right here. मैं तेरी Emerge. शक्ल दिखा दे यार, मजा नहीं आ रहा। अबे शक्ल दिखाऊं तो पागल है भाई, मेरे आँख सूज रखी है। आगे मेरे आगे तेरी मम्मी ने You baby, just a little thing. कोई ना मुझे चलेगा, चुप रह। जी क्या बात था, मजे के साथ मुझे मतलब बहन को दिखा, बहन ने दिखा नहीं ना आँख में क्या हो रखा है। सोच रहा हूँ कि ये देख आँख फूट रही मेरी, तो आँख को भी मारी मेरी, तो जैसा भी ये मेरा है। अच्छा मेरा साढ़े मेरी शॉर्ट सर्कल लिखने इस मंथ क्या ना। चले जाएंगे क्योंकि मैंने चले जाएंगे।
बैटलफील्ड जीते तो बैटलफील्ड बोल रहा साले। ये तो ये करना है अब। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कैमरा है कैमरा है ऑफ किया हुआ दिखाना तेरी खूबसूरत है खूबसूरत, मेरे खूबसूरत से लेकर रो जाएंगे लोग। वो कितनी खूबसूरत लावा निकाल ली। अरे बढ़िया भाई बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। सुना आज लावा निकाल ली, गलती से। हाँ साले पूछा कर तुझे मैं अरे Strike right now, right here, right now. भाई तो मार रहा है तो बता नहीं मेरे भाई। ये तो रियल वर्ल्ड में तो है ही नहीं ऐसा, इतना खतरनाक नहीं, मतलब है तो ही पर इतना खतरनाक नहीं है रियल वर्ल्ड में। Right here, emerge. नो Right now. Lush as the moon. भागो मर गया वो तो। हाँ जी सीधा हूँ, ये पागल है तो। हाँ तो नहीं पागल है ये तो अपने को ले सकती है। तो मार साले को, मार मार तो साले को। मैं कभी बतलाता नहीं पर आँख खुल जाती है मेरी। मेरा पता है तुम्हें, पता है क्या तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा हाथ भी सूजा हुआ पता है, मेरा हाथ की क्या बताऊँ यार। Use the force authorized. Right here, right now. Emerge. Bow your head. Right here. Emerge. अरे बहुत आराम Right करो here. ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं। The wind knows me. Silence. I warned you. Looks like violence is the end. Shit, Right now. ये तो नया अच्छा मर गया। निकाली तो निकाली बट रेडिएंट कैप्चर किया, अच्छा पता नहीं होगा फिर। समझ रहा हूँ मैं, सब सारे बदल आ रहा अपनी। बोनस क्या करूँ, बोनस का अच्छा ही नहीं लोग देते हैं। और भाई साहब ये भी कचरा है। ओ माय गॉड ये तो गंदा इतना कुछ नहीं मिला। बात करते हैं हम। चल भाई यार मेरी तबीयत खराब है, मेरी तेरा तुझे क्या। अरे सुनना ये तो मैं सोच रहा था कि रोब्लॉक्स में ना वो ग्रो गार्डन खेलता हूँ, क्या बोलता है, क्या बोलते बता। तूने खेला ग्रो गार्डन, लोग बोलते हैं ग्रो गार्डन, वही बताता वरना ये लान मेरी हो जाती। उफ दुखी दुख। हाँ मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा हाथ यार। सब पता है नवा। तूने आज तक Add astro. हाँ कैसा होता Thank है, you for क्या होता है उसमें तो पता है, मिलता है, मैं ध्यान नहीं दिया। Add astra. मैंने ध्यान नहीं दिया तो ऊपर क्या बोलते हैं ना, पर्पल पिंक वाला क्या आता है वो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना। एक दो बार तो मैं स्किप करता हूँ सीधी। अंधेरे से डरता हूँ। वेल मस्त है। कब मिलता है, क्या नाम था उसका, नाम क्या था बताइए वापस से। रेडिएंट क्राइसिस क्या था वो, अच्छा रेडिएंट कैप्चर।
Reading capturing radiance in Genshin Impact mechanism that increase your chance of getting a featured 5-star character on limited character banner by adding a 10% chance to win. हाँ तो एवरी टाइम लूज होगा तब लूज, मैं तो लूज होता ही नहीं ना, ये दिक्कत है, तो जीता ही नहीं मैं तो। हेलो साहिल ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम, क्या चल रहा? लिखा हुआ कैप्चर रेडियस इन इज अ Genshin Impact mechanic that increases your chance of getting to the featured 5-star character on the limited character banner by adding 10% of chance to win the 50-50 every time you lose a 5-star pull. मतलब वो ऐड करता है बस, ऐसे कुछ नहीं है। टू ट्रिगर इट मस्ट बी ऑन द लिमिटेड कैरेक्टर बैनर एंड लूज द 50-50। अच्छा जब, अच्छा ऐसा है कि जब 50-50 हारता था मैंने 353,500 बहुत बढ़िया बढ़िया। अगर तू चाहता है तो लाउमा निकाल लेगा, तो लग रहा है तो कि लाउमा सही है, तो फिर क्योंकि लाउमा आई थिंक ना मोस्ट ऑफ द 4-स्टार कैरेक्टर की टीम हो जाती है अच्छी थी उसकी। एक नफर निकाली बड़ी बाद में वो जरूरत पड़ जाएगी, बाकी ये 4-स्टार कैरेक्टर टीम हो जाती है इसकी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ना ये लिख रही है लाउमा, इसकी 4-स्टार कैरेक्टर टीम होती है इसकी। मैं भी इसकी 4-स्टार कैरेक्टर टीम बिल्ड करूँगा, अभी मैं बिल्ड करनी पड़ेगी इसकी। देख सीधे बताऊँ तो 3 बार अगर तू लगातार लूज करता है तो तुझे 450 लूज पर वो नया एनिमेशन दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, लिखा हुआ है कि हर एक को दिखता है जब 50 हारते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट देख चेक करो। हाँ यहाँ टीम आते हैं, लाउमा की टीम आते हैं, तो लाउमा Even when darkness falls, the Shinjo. faithful shall not stray from the righteous Cookie. path. क्या For मेरे justice. कुकी हेलो कुकी, हाँ ये कुकी। अबे ना What they do this time? यहाँ मेरे को ना एक बार सोच रहा हूँ क्या रखूँ यहाँ पर, क्या पर ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे हैं। या तो मैं कादो रखूँ जिससे मेरा सिर्फ या फिर हाइड्रो या इसका डैमेज बढ़िया, लेकिन उससे फायदा नहीं है। या फिर क्या रखूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ या फिर ऑफ फील्ड कोई किससे पूछे, यो तो पूछता और यो बता नहीं पाएगा अभी। कोई ऐसा कैरेक्टर जो ऑफ फील्ड 4 अटैक अच्छा मारता हो, ऐसा कोई कैरेक्टर थी मेरे को, और रिएक्शन में ज़्यादा दिक्कत ना दे। टिग्नारी, बट टिग्नारी के लिए फिर क्लोज आना पड़ेगा, क्लोज दिक्कत है। मैंने खुद सर्च किया था, वो देख सर्च करना एक बार वापस से, मैंने तो जो तूने बोला सर्च किया मैंने तो। या फिर तो इसका मैं नहीं, इसका नहीं करूँगा। किससे पूछा है, कोई बड़ा स्ट्रीमर जानता हो क्या गरीब को? आर्टिस्ट से पूछता हूँ। साढ़े 7 कोई ऑनलाइन है क्या बड़ा आदमी? सप्लीमेंट ऑनलाइन थे भाई, कहाँ गए? अच्छा बैठा है आगे यार टॉक बोर्ड यार। यार क्या यार, मेरी आँख सूज गई पता है तुमको? मक्खी ने काट दिया मेरी आँख सूज गई। हाँ, वो नहीं हाँ साढ़े तू ही है। काला जादू करवाते हैं। आर्ट है सुनना, देख मेरे पास ना जैसे मेरी टीम लाउमा, कुकी और शिंचो की है, तो ये तीनों कैरेक्टर ऑफ फील्ड है। हाँ। तो चौथा कैरेक्टर ऑन फील्ड चाहिए ना, मतलब जो अटैक करता है नॉर्मल अटैक नहीं, कैसा कुछ नहीं यार, ये दिक्कत है। फिर नेफर का वेट कर रहा हूँ मैं, और क्या करूँ? नेफर तो ब्लूम डीपीएस है। हाँ तो फिर हाइपर ब्लूम नहीं कर सकता, ऐसा भी है क्या? पता नहीं कर सकता है कि नहीं, इसको कुछ मेरे को एक तो ये समझ ही नहीं आ रहे भाई। ये कह रही है ब्लूम में डैमेज करती है, फिर ये हाइपर ब्लूम में भी खेली जा रही है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या चल रहा है। किसके वो ऐसा सब खिसक गया यार। क्या बोलते? नहीं नहीं निकाल लूँ क्या? नहीं निकाल सकता मैं भी चाहूँ तो, लेकिन फिर नफर निकालूंगा तो फिर नुकसान मेरा। नेफर ही निकाल लियो है ना, तो ऐसे चलाऊँ बेचारी को। तू कौन सा एंड गेम कर ही रहा है? हाँ हो तो रानी में। नेफर ही निकाल लियो जो है, सिंगल टारगेट है ऐसा कुछ। ये क्या है भाई, ये 160 में लैपटॉप लिया जा रहा है, पगला गया है क्या कोई?
इस स्ट्रीम में ना यहाँ के लिए जब तक मैं चौंगली यूज करूँगा, अटैक बढ़ता है इससे। इसको बिल्ड करना है, बट इसको बिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, पैसे दो यार गरीबों को, आई मीन गरीब को। ये नहीं पास, मैकेनिज्म भी नहीं है। मैंने मारा क्यों नहीं बेचारे को, साला रूइन सर्पेंट बच्चा आएगा, मार पड़ेगा। फिर ये करना पड़ेगा नाकूवीड। और पता है मैं नाकूवीड कलेक्ट कितना महंगा इसलिए करके, नाकूवीड मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैंने कुछ बिल्ड किया था जिसके लिए नाकूवीड चाहिए था, क्या कहता मैंने याद भी नहीं रहा। अच्छा हाँ, वो कंपस के लिए याद भी ना, मैं एकदम मत निकाल, अब बस नेफे पे जा और कोलोमिना के लिए जा। हाँ वही है। वैसे अभी आऊँ तो मैं नहीं निकालता हूँ, टीम बन जाएगी लामा की तो पूरी। लेकिन नहीं चाह रहा मैं, लेकिन नहीं चाह रहा ना, मैं नहीं चाह रहा, पैसे नहीं चाहिए भाई, पैसे पैसे नहीं मेरे पास हो सके 44 पुल्स हो गए मेरे पास, निकालना चाहूँ मैं निकाल लूँ, पर वहाँ आ जाऊँ 52, वो बात क्या रहेगी फिर। एक मिनट, ये क्या है? ओ ये क्या है, ये क्या है? हेलो, ये वो ना हो वैसे स्टोन, स्टोन कैसा रखा है मैंने, क्या कुछ गैजेट यूज करे मैंने, कोई गैजेट यूज करा इसका कोई कंपनी है पर्टिकुलर, क्योंकि ये रिवील तो होता है, रिवील कैसे हो रहा है ये क्या? या अब होने लग गया, अपडेट होने लगे, रिवील हो गया, अपडेट होने रिवील होने गया अपना पे। क्या हो रहा है? होना भी चाहिए ना उसके पास में ना, चेक करते हैं। अपना रिवील होने लगा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने कंपास और मेरे पास एक्स्ट्रा के रिवील हो जाए, कैसे रिवील हो गया वो? रिवील हो जाए प्लीज, कोई हो प्लीज रिवील हो जा। अरे रिवील कैसे हुआ था वो? मैंने कुछ दिखाया था क्या, याद ही नहीं हुआ तो। ये अपडेट कुछ हुआ था क्या? मेरे को समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो गया मेरा। अभी नहीं हो रहा यहाँ कुछ। कंपास था क्या? रिवील कैसे हुआ था वो? नहीं आ रहा मुझे समझ में, मैं कहता हूँ। कुछ बोल रही है, इस बात करता हम लोग। क्या चाहिए? You scared me anyway. Where'd she go? How's she going? Where'd she go? Something. इसको 100% कर ले आज, लेकिन 100% के लिए उसका वो नहीं ना, क्या बोलते, मैप नहीं मेरे पास। गोल्स इन न्यू हेड डियर एंड कंटिन्यू क्वेस्ट, अच्छा ल्यूए। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं। मुझे भूख लगी है, पहुंचो। ए मुझे भूख लगी, मैं खा के आता हूँ, मैं ना मटर क्या मटर, वो बैटरी टट्टी टेंशन चुप रहे, चंपी पंची रही बनाया खाने लिए कुछ। खाने के थाली खाली है, कुछ होता है चल जाता है। भाई जीते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर लो प्लीज, गरीब को भला हो थोड़ा सा।
क्या एक मिनट ऑटो रहता ना ताकि मेरा शिफ्ट अरे ऑटो का ना अपने आप हुआ कर रहा है। पैसे दे दे चैंसो मैन की भी मूवी देखनी है साढ़े। मैं तो आएंगे वही नहीं देखी तू चैंसो मैन देखा। ए तूने देखी चंपी अपनी वो नई वाली मैंने तो देखी। कैसी है? तो वो चैंसो मैन देखने वाला तूने वो तो देखी होगी पक्का तभी चैंसो मैन उंगली कर रहा है। अच्छा डंडिया दे डंडे डंडिया दे डं 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 डंडिया दे डं डं। बद्री विंग्स देखना एक बंदा बद्री विंग्स खेलता उसमें जानता हूँ। सर्च फॉर क्यू द मिसिंग माइनर। कहाँ क्यों ढूंढ रहा है क्यों ढूंढा है क्यूटिंग। क्यूटिंग क्यूटिंग का हेलो क्यूटिंग। सूजी आँख देखनी है चुप रहे। कौन खेलता है वो है एक एक्सेल नाम का बंदा है AXCL लाइव अभी। वधिंग वेव्स 2.667 सेकंड हाफ स्टोरी कर रहा है अभी वो 2.6 की पता नहीं कौन सी है। मैं तो खेलता ही नहीं इसको पता ही नहीं। वो उसने वुल्फॉग जूस दिया है क्या मिसिंग सर्च फॉर कहाँ है कोई नहीं। वो रट्टी गेम है हाँ बचा दीदी बैठ रहा एक और जो दीदी खेलते हैं सॉफ्टवेयर सीधी दीदी खेलता है वो। भाई लाओ कौन एनफे की टीम में डाल देता हूँ क्या बोलता पागल है ना तू भी तो एनपी टीम में डाल देता हूँ गधा। तो चल का soy bien como que va I am biggest fan से भानू मैं। हाँ पता है मैं भी नेगेटिव रिव्यू सुन रहा है शिट मेरे मोटे हाथ तक क्लिक होगा इसी और मैंने उसके रिव्यू सुने इसलिए मैंने नहीं किया। वो सप्लीमेंट बोला अच्छा है बट पता है वो पहले लोग बोल रहे खराब है और उस टाइम खराब ही था अब तो ठीक हुआ ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे अब अच्छा ना नॉट का करने लिए अब देख अब कोई टेंशन नॉट का की नॉट का चलते तभी भी। आर यू सुअर मैं अंधा हूँ कि यहाँ पर कहीं वो है मुझे दिख रहा है कि मैं अंधा हूँ एक मिनट वहाँ से चाहिए
मुझे यहाँ से दिखना चाहिए था वो क्या बोलते हैं जो भी यहाँ पर आता है वो क्या नाम है तिल्ली सी तिल्ली चल तिल्ली चल तिल्ली तिल्ली चल 50 की पीटी हो गई है। हाँ अच्छा कर फार्म दीदी बैठा ना दीदी का तो खेल तो साढ़े कचरे दीदी खेलूंगा मैं चल जा कर। क्या कर रहा अच्छा टिकट नाम क्या अच्छा वेल्किन दिला मैं खुद वेल्किन नहीं पा रहा पैसे नहीं आ रहे वेल्किन दिला दे कोई याद नहीं आ रहा मैं लिखी थी ये रात में डिलीट किए थे मुझे याद नहीं पर मुझे याद है डिलीट किए थे कोई ना मुझे ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं तेरे पास पैसे नहीं अच्छा मुझे मुझे दिक्कत था तुझे दिक्कत क्यों साले पता लगेगा लास्ट वाले देख के कल तो फिर जाओगे तू बता रहा लास्ट वाले देख के हैं उधर अरे तूने अभी की तो याद है ना तो अभी की तूने ये अभी भी याद की है इसलिए अभी तो कर लेना जाना ऑनलाइन का जा ऑनलाइन अभी सर कलेक्ट मशरूम मीट अच्छा हाँ भाई और कुछ मशरूम Emerge. Receive my blessing. ये दिक्कत है जब एम का नहीं होता ना ये भी नहीं बात वैसे अच्छा है मेरा हाँ हो गया हाँ अब क्या अभी इजी इजी क्या साले हो गए थे यहाँ एक यहाँ क्यों मंगा रहे जब वहां मंगाना था मैं वही बता रहा हूँ वहां मांग दे रहा था जब पहचान तो यहाँ है क्या गेम भी तो है ना थोड़ा सा आधा तो नसीब चलता है पता ना दूर है ना हाँ मुझे लूजा चलने जाता भाई मैं तो नूब ना आएगा तू क्या सोच रहा है तू यार पागल हूँ तो मैं हूँ पागल बट क्या और बजा पागल मैं है कहा मेरा पोपली बाबू का यहाँ दिखने जाता है हाँ कर लिया तुमने कर लिया हाँ कर लिया नशेड़ियाँ तू भी तो नहीं की है कर दे अब ताड़े काम करा करते मेरी आंखें मेरी आंख मेरी आंख में मुझे अनफ्रेंड कर दिया तूने हाँ कब का पता नहीं यार मैं अनफ्रेंड उनको करता हूँ जो जिनके ना मैं देखता हूँ लास्ट ऑनलाइन 10 डेज से होता है उसके जो इस गेम को छोड़ रहा है मैं उसको छोड़ रहा हूँ हाँ कम हो गया हाँ
मैं 1-2 दिन का तो मैं मानता हूँ, 1-2 दिन ठीक है, सब समझ आता है। 10 दिन है, 10 दिन का ऑफलाइन रहता है कोई बंदा। पैसे कहाँ गए हम कितने, मतलब बोल रहा हूँ। देखनी है मेरे आके, देखनी है तुम लोग, तुम लगे थे भाग में जाना, मेरे आके देख के क्या आके देखनी है, आके रहने देता हूँ यार, क्या देखो आग। क्यों 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 ध्यान ही आंख रहा है ना, आगे तुम नजर ला रहे हो बैठे, मेरे नजर लग जाएगी। वो बोलते ना नजर आने से, नजर आने से फिर और बढ़ जाता है ऐसा, तो वो नहीं मिलती है। टेलर के भी, हाँ अब याद आया। हाँ यूरो बाजी बनता हूँ, अनफ्रेंड कर ली भी। रोज खेलता है, रोज खेलता है, फिर तो नहीं होगी शायद तक। पैसे लिया, पैसे लिया, अब देखते भी जाओ। क्या क्या नहीं, अगर होती तो ऊपर ही होती ना, क्योंकि तेरे 60 आ रहे हैं ना, तो निजानी नीचे थोड़ी होगी। 58 कम दिखे तेरी। नहीं तेरी नहीं है, ये तो ऊपर होनी चाहिए ना। नहीं है। ये राई कौन है? इसने अपनी आईडी चेंज की थी ना। इसने बताया, इसने बताया, अभी ने बताया, इसने मेरे से क्या मराया, इसने मेरे से ना लोकल एरिया बनाया साला वो वाला। मैं बोला कि मारना सुबह मतलब लोकल एरिया मारने बोल रहा है क्या। बोला कि ये बोलो, ये वो बॉस बोल रहा है, बोला कि ऐसा मतलब जो मर नहीं रहा, बोला ऐसे एड्रेस सही है। ठीक है मैं जा रहा हूँ सफर कर। अच्छा हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अचीवमेंट मिलती है ना, हाँ मुझे अब पता है अचीवमेंट मिलती है, पहले मुझे नहीं पता था कि अचीवमेंट मिलती है उससे, अब मुझे पता है उससे अचीवमेंट मिलती है और वो मिलता है, फ्रेम मिलता है, लेकिन इसमें मिला ना इसको, ये गिरा तो मिला, फ्रेम मिलता है ना। डिमन बुरा है, सब ले लेता है, यही मेरी गलती है। इसमें डेट ली जाती है, किस डेट को कंप्लीट किया हमने, नहीं 2022 से गेम खेल रहा हूँ मैं, दिख रहा है। अभिनव 2022 से खेल रहा हूँ मैं। तुझे आइडिया है, उसका अचीवमेंट नहीं मिल रहा है वो, तुझे आइडिया है। आइडिया हाँ, ये बात ऐसे होनी चाहिए, आइडिया रखनी चाहिए अपने पास, ताकि डायरेक्ट फ्रेंड को भेज दूँ। अब है ना तेरी आइडिया भेज दूँ, मैं नाम लिख दूँगा ताकि तू याद है। तू भी तो घर है अपने नाम पे है, ऐसे नाम रखता तो मैं अनफ्रेंड, तू बाहर का होगा। जय श्री राम कार्ड ले लिया तो अनफ्रेंड। हाँ वो बोलिए ना, 1 लाख 7.5। और नमक भी गया तो मैं कहता हूँ ठीक ना, नमक लिया तो बोल गया था खाता भी। मेरे पास पहले से नमक पड़ा। ये बात मेरे पास पैकेट 35 नहीं पड़े। कितनी बड़ी थी करना चीजें, तू क्यों भी खाता था, इतनी बड़ी हुई है क्या, लब डब करेगा पेपर। दाल बड़ी है, अच्छा मतलब समझा बुझा। मैं क्या ना फ्रेंड को भेज ना, हाँ भाई। ऐसा मुझे नहीं ऐसा एक बार करना, फिर मैं चेंज करता हूँ। कोई मास्टर जी चिट्ठी सुन के, हाँ वो तो अच्छे गाना भाई, वो सुनो वो तो। अभी ना तू भी सुनने पर गया ना ये मास्टर जी की चिट्ठी वाला, पता है कल ही मैं गाना सुना था प्राइवर ने, तो मैंने उसको बोला ये गाना सुनी बार मजा आएगा, तो इसने गाना सुना, पागल हो गया ये। तू भी सुन, तू भी मजा कर। उसका नाम मास्टर जी की चिट्ठी गाना है। गोट मोनिटाइड है सुयश, पागल क्या। अच्छा मोनेटाइज, हाँ गॉट मोनेटाइज, गॉट मोनिटीड मैं क्या लिख रहा, हाँ मोनेटाइज यार, मेंबरशिप ले लिया यार। सुयश क्या कर रहा है, देखो तूने तो मेंबरशिप ली थी पहले, नहीं ली क्या तूने, सालों पहले एक बार ली थी, याद हो तो। न्यू आईफोन है ना, देखा क्या, देखा आईफोन। लेना फिर क्या कर रहा है, मेंबरशिप ली तूने, ऐसा कर रहा है क्या, दोस्त आता है वो दोस्त से मेंबरशिप मिलती है।
कब ले रहा है न्यू आईफोन साढ़े मेरे 8 तो अरे मैं आँख इसलिए नहीं यार, लोग लगे आई फ्लू और है पता है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा आँखें अपनी। आँखें कॉफी पीते पीते मैं खाने लेके आऊँ, खाना जब खाना खाते थे गेम खेलेंगे। पब्लिक गिफ्ट करना, पब्लिक गिफ्ट है। क्या कर रहा है पोपली? मजे, वो मेरे आँख के मजे ले रहा है। क्या होता है अनफ्रेंड कर देता साला। अच्छा हाँ मेंबरशिप लिए इसलिए अनफ्रेंड कर लिया ना। अभी ना तू तू वो आया फिर मास्टर जी मैं अपने लिए छाछ ले रहा हूँ, छाछ ठीक है, चावल के साथ छाछ खाऊंगा आज। वन मिलियन सब फैन, 1 मिलियन सब जिस साल तू मेंबरशिप लेगा, जब तू कमाने लग जाएगा, जब मैं कमाने लग जाऊंगा जब। 1x में बोल ना कौन सा गाना, 0.5 फिर भी सुन लिया समझ। अच्छा मास्टर जी की चिट्ठी, मास्टर जी वो टीचर उसकी चिट्ठी की चिट्ठी, मास्टर जी चिट्ठी। अभी सुना क्या? मास्टर जी उसकी चिट्ठी, मास्टर जी की चिट्ठी, मास्टर जी की चिट्ठी पुगलाई। हाँ देख सुन, इसको सुना इसलिए बता इसको। ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। इसके मेन आर्टिफैक्ट कौन सा है? इसकी मेन आर्टिफैक्ट ये है ना, वो गिल्ली ड्रीम था क्या? है नहीं हम पे तो गिल्ली ड्रीम्स, तो क्या होता है गिल्ली ड्रीम? एक सही है और परफेक्ट भी है। क्या गाना रहता है ये सॉन्ग? अरे पूरा सुना तू? तूने सुना ही नहीं ना, तूने सुना ही नहीं तो उसका मेन मेन चीज देख वहां पर एड का जो एड आएगा ना। बाद में लगा, अगर हो बत्ती कछुआ छाप, आग में बैठा पानी ताप, ताप लगे तो कंबल तान। वहां से वहां पे बताता है, अगली बार वहां बताता है पागल, तूने सुना है अभी? अभी तक तो सुना ही नहीं। अभी तो सुना ही नहीं। This realm. If you ever. मैं पहले तेरे करता हूँ ना। अभी ना लॉगिन इनवाइट बता रही है आईडी बात अभी ना वापस से।
पागल है ये। इसने क्या करी तो तभी बेचारे ने। देख रहा है गाने के अंदर इन्होंने प्रमोशन डाल रखा अपना वीआईपी अंडरवेयर बनिया। अपनी आईडी बात ना ये गेंशिन की अभी ना अच्छा बेटी का अरे क्या हो गया? झटका सा रास्ता महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी निकल के मारा ब्रेक ऐसा होता है वो। ऐसा होता है वो तुम्हें याद ही नहीं भाई लीड करनी तो इसलिए बोल रहा हूँ। ले मैं तू ले ले कचरा 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 फिर तो तुम्हें कंडा से मार दूंगा। जो करने से हो जाता क्या आजकल हो जा प्लीज हो जा प्लीज हो जा लेट्स गो। मैं मेहनत करती उतनी बड़ी भाई तू मेहनत करती उतनी है। अभी इन्होंने आज बोला कि तू का कुछ दो तीन चुका है। Add astro. Thank you for वो डर रही है माँ से डर रही है। Add astro. मैं काम कर गया कुछ भी आ सकता है। हाँ शिट ये तो काम अच्छा आसान नहीं है। अभी ना पहले कितने मिस्टर की ग्राइंड करने के लिए अरे एक भी नहीं। अबे साढ़े कचरे विश्व तक मिले करने के लिए क्या आदमी यार करा कुछ छोड़ा ही मिनट। हाँ विश यूज कर ली ये यूज नहीं कर पाया ना घर है तू भी तो बेटे कितनी देखते हैं। हाँ 40 हो रही है। पता है एक गधे ना जो कैरेक्टर मैंने कहा वो निकाले उसने पर वो कैरेक्टर से निकाला ही नहीं पागल ने। जैसे मेरे पास टीआईमी थी इसने निकाल ली टिगाई था टिगाई निकाल लिया क्लाउडी से क्लाउडी निकाल ली डिलू था डिलू निकाल दिया यार लिचिन निकाल ली नू भी निकाल ली ठीक है और पूरी ना भी और ये तो इसने ये भी मेरे साथ निकालते हैं है ना नहीं शिवा में पहले निकालते इतने पहले शिवा में
लेकिन इस गधे ने ये निकाल ली जो मैं निकाल नहीं पाया, और ये निकाली जो मैं निकाल नहीं पाया, और ये पता नहीं निकाला ही क्यों गधे ने, पागल की निकाल तो नहीं गधे नूब, इत करता है गधे को। इसके लाउमा के नीचे निकालता ना ज्यादा मैं के नीचे बच्चा, या मुरानी निकाल दो नीचे मुरानी या चाका निकालनी चाहिए तो पता है, ये नटलंग का कैरेक्टर निकालना चाहिए मौके का अलावा, ये मौके का निकाल तो अच्छा है, तो मौके निकाले नाइट लाइन के लिए। मैं ये सीरीज कर रहा है, मैं ये सीरीज करता है। जानिस मेरे बेटे का साउंड तो इसने अच्छे नहीं ना। अभी मैं खाना तुम लोग ना क्वेस्ट पे लाए थे ना, क्या बोलते क्वेस्ट लाए थे तुम आपको पुत्रेगी ऐसे ही होगा ना, ये टाइम में चल रही है हमारी। Hold on. There's a few things I'd like to clear up. Go on. So, after you left the campsite, we had a longer talk. Clearly, we've only scratched the surface of the Temple of Silence question. It doesn't surprise me at all that the one in the academia is a fake. Do you have any connection with the Temple of Silence? I do. I trust you're all aware of the spirit that gives me my power. Herewego, the original founder of the Temple of Silence. Due to my unique constitution, I was put through a number of trials in the desert when I was younger. Later, I met the professor, and he brought me to Sumeru City. But my memory of that time is hazy. I can't recall much. It's a good thing that Kaveh noticed the emblem on the letter. Without that, I don't know if we would have connected the dots and realized there was more to this case than mere extortion. I did not recognize that symbol at all. Whether that's because I've never seen it, or because my memory fails me, it's hard to say. Yeah, you're right. Thank goodness for Kaveh, and for Alhatham's diligence during his time as acting Grand Sage. But Cyrus must have recognized it right away, right? Otherwise, he wouldn't have had any qualms about you reporting it. Oh, maybe his connection to the Temple of Silence goes even deeper than yours. I suspect so too. तो Professor has never once mentioned the Temple of Silence in conversation. And whenever the conversation turns to Herewego and the concept of spirit indwelling, he avoids going into any depth. Well, speaking of avoiding things, you do realize, don't you, now that we've caught up with you, you're stuck with us for the rest of the way? I am aware. And I have accepted it. Or rather, I don't see how I could manage to ditch you en route, so I might as well accept that you're coming with me. That's right. Fact is, we're coming with you whether you like it or not, so the best option now is to try to look out for each other. Ha! है Fair enough.
Then at least let me buy you a drink once we're back in the city. Works for me. All right, off we go. Let's start by seeing what the guards here can tell us. Hello. Mahamatrasino? I'm looking for someone. So I'd like to confirm any recent foot traffic in and out of Aru village. A man matching that description passed by Aru village not too long ago. He stopped by to load up on food and water and feed his sumpter beast. Then he was on his way. अच्छा मैं थाली और कर रही थाली और क्लास करता हूँ रुका Where was he going? Good. Let me think. He took a seat by the entrance of the village for a while, and had a brief chat with the person who came to deliver the water. He said he was headed somewhere near an oasis, but he didn't mention which one. Do you have a map? I can mark out the direction he was heading and the best routes to any nearby oases. I have one. Mark away. Great. There you go. Thank you so much. You were a great help. You were a great You've got a really good memory. Ah, you're quite welcome. Just doing my job. Best of luck. I hope you find him soon. Oasis यहाँ Oasis है What a wild and desolate sight. So Hold on. I see some people over there. Do you think it's safe to ask them what they know? अभी इनकी सर्फेस साइड फाइट वो वाला ना I'll go. No. I'll do it. है ना अभी ना
Why can't Sino go talk to them? What difference does it make? Given my background, appearance, and the way I dress, I might not be the most welcome visitor here. Just in case, it's probably better to let a more neutral party handle things. Ah, hello there. I hope I'm not interrupting. My friend and I are looking for an elderly man who's gone missing around these parts. Any chance I could ask you a couple of questions? Oh, a missing person, huh? Sure. What do you want to know? I'm just wondering if you've seen him. Let me give you the details. So, a silver-haired guy in a long robe, culture type with thoughtful eyes, and he's traveling alone. He'd stand out like a sore thumb around here. Yeah, sounds like the kind of guy we'd remember if we saw him. He's looking behind me. Uh-oh. That guy is looking our way. Your friend over there stands out a lot, too. जानता है? Hey, aren't you Sino, the General Mahamatra? Yes, that's me. You don't seem surprised that I recognized you. It wouldn't be the first time. Oh, you're the one looking for the old man who's gone missing, aren't you? I have a bad feeling about this guy. Someone's on edge. You don't trust me much, do you? No need to hide it. I understand why you're wary of us. Still, you came to us asking for help. Do you want it or not? I thought you were a group of merchants. Seems I was mistaken. Your henchmen don't look like much, but something tells me they put up a better fight than most mercenaries. Hey, hear that, guys? You're my henchman now. Suits me, as long as I get paid for it. Just cut to the chase already. I'm running out of patience. All right. Come with me. All of you. Don't you want to find your friend? A silver-haired, long-robed, culture type with thoughtful eyes? Sounds like there's a whole other side to Cyrus I didn't know about. So you know where he is? Just follow me. I'll take you to him. And here. What? Where are you looking? There's nothing here. Please step back. ले जा. Whoa, something's coming out of the ground. What is this enormous building doing here? And how was it so well hidden? King Deshret's technology? Wait, so... Hold... Is this the Temple of Silence? All good questions. There'll be plenty of time to address them. Later. चलो. 2 मिनट ना. Mystery 2 मिनट. आधी स्ट्रीम नहीं रहेगा, मैंने देखा नहीं है. This is not what Paimon was expecting to find in the desert, especially not hidden right next to an old... अनु भी सही है. Oh, Paimon's scared. They must have kidnapped Cyrus. Do you think this is the guy Raka met in the tavern? What's wrong? Thinking about your professor? I just hope for your sake you haven't done anything you might regret. Me too. Hope I haven't done anything to incur your wrath.
It's been 2 days. Let's head to the workshop and see if Yehoda found any new clues. Right now. Emerge. Right now. अभी ना एक चीज चेक करने की है ना, लाउमा की प्रिंट एबिलिटी नॉर्मल कैरेक्टर से ज़्यादा फास्ट है कि नहीं है। इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है? क्या बोलता है? अगर होगा तो फिर देख सकते हैं आप। All right. You can wait here for now. I'll inform our leader that you've arrived at the Temple of Silence. So he's just gonna leave us here unattended? Maybe. They can't have been at the oasis by chance. They were waiting for us. Whoever the leader is here, they were obviously counting on us showing up. So this is the Temple of After leaving the rainforest, they hid themselves here? Hey, look! That guy's coming back. Don't worry. Someone will come and call for you soon. What's your name? Sorry, guess I was so delighted to see you, I forgot to introduce myself. My name is Sethos. I'll be here if you need me, but I'm not planning on answering all of your questions. Other than that, you can occupy yourselves however you see fit. So we're free to explore by our... Yep. I mean, I'm not worried about you running off. Cyrus is here. And unless I've misunderstood, you're all quite anxious to see him again. He's right. Well, if we've got some time, we might as well take a look around. I never imagined that the true Temple of Silence would be hidden somewhere like this. We've passed through these parts before, but never noticed anything. That's King Deshret's technology for you, I guess. It borders on the miraculous. Amazing to think that it's been preserved intact all this time. We should be wary of our hosts. Still, at this point, we can be confident that the professor is safe and sound. So that's something. अभिनव, क्या स्ट्रीम पर? अभिनव हो गया क्या? रोंदू। ख्वाबों पे सहरा खाली बली हो गया पूरी दुनिया। एक मिनट, किसी ने क्रॉसर कोड मांगा, क्रॉसर कोड दो पहले। मुझे अब ध्यान आया, किसी ने मेरे शॉर्ट पे कमेंट किया क्रॉसर कोड चाहिए उसको। With the last one standing, 2 hands in the chair, I'm a champion. To be left when I'm looking forward. I live for the fact I'm a soldier. Even when the night is gone, and even when the sky is hidden from view, still the moon shines its light upon you. Hey, Sethos! Have you got some time to chat? Sure. Although, I'm assuming by chat, you mean you have questions for me? I don't blame you. Anyone else would. We get a lot of people asking you questions.
Not often. The Temple of Silence is a place of quiet and solitude. We don't get too many visitors. You were the one who tricked us. Yeah? Uraka, do you know Sino? Have you ever been to academia? Academia. Crosshair. Yes, that was me. Although, tricked is a stretch. He was asking everyone in the tavern about ways to make some easy money. He insisted that nothing was off the table, even if it broke the law. So, I told him that Cyrus had embezzled a large sum of mora from the desert. So you framed Cyrus for a crime that he did not commit? No. That's not entirely true. Let me jog your memory. The letter just said that he had uncovered Cyrus's secret. It didn't say what secret. Of course. Uraka was a great accomplice, really. Very cooperative with a little bit of wine in him. Did exactly what he was told. And not much of an original thinker, though. It doesn't surprise me that he struggles academically. Why did Cyrus leave for the desert as soon as he received the You'll have to ask him that one yourself. Certain things I can't. All you need to know is that he recognized our emblem. And it was his own choice to take the bait. What kind of question is that? He's the... Right, but back at the Oasis, you can't have known who he was for sure, or you wouldn't have asked him. So, what we're really asking is, have you never seen him in person before? I've lived in the desert my whole life. Guess you could say... Ugh, why does Paimon feel like this guy's not being straight with them? Come on, we've only just met. If I give you all the answers up front, nope. Really? I have no need to go there. Not when the taverns are full of the Urakas of this world. Besides, we're well aware of what goes on at that place. Spies? It's not as clandestine as that. The city gates are wide open. Anyone's free to walk in. You can find out all you need to know just by walking around town and hearing the word on the street. Yes, that was me. Although, tricked is a stretch. He insisted that nothing was off the table, even if it broke the law. So, I told him that Cyrus had embezzled a large sum of mora from the desert. So you framed Cyrus for a crime? No. That's not entirely true. Of course. Uraka was a... Why did Cyrus leave? You'll have to ask him that one yourself. All you need to know is that he recognized our emblem. I'm like up. खुल जा सिम. Ah, here he is. Grandfather, the person you wish to see is here. Well done, Sethos. Greetings, one and all. I am Ba Moon, the current leader of the Temple of Silence. I know... Professor! Cyrus, are you... Watch what you're doing! Oh, my apologies. We have no intention of causing you distress. But you must understand, Cyrus is of great importance to us. We had to find a way to bring him back. Cyrus owes me his life, and to the Temple of Silence, he owes a debt of gratitude.
wanted to end my feud with this old bag of bones before you caught up with me. But you got here so quickly. Just leave, Sino. This is a matter between us two old men. You're all too young to get involved. So that's why you didn't want to report the letter. You'd made up your mind to come here from the beginning. You only left in such a hurry to try and throw us off your trail. Some things in life catch up with you, no matter what you do. You shouldn't have come. That alone brought the others. Sino didn't make us do anything. We came here for the same reason he did. To rescue you. We'd appreciate you telling us the truth. Otherwise, it seems a little unfair on everyone who had to stay behind. My secrets are secret for good reason. Bringing them to light can only lead to misfortune. You're afraid, aren't you? You can't bring yourself to speak of your past deeds to the students you nurtured as if they were your own children. एक तो अभी ना मैं सर अपना यूपी ले आता हूँ पर तू अपना यूपी में ला लियो कुछ यार और हाँ मैं अपना यूपी ले आता हूँ दूसरा मैं वो एक चीज एक सोचो शॉर्ट बनाने के लिए ना लाउमा का क्या ना लाउमा का रनिंग में या फिर मतलब नॉर्मल कैरेक्टर के रनिंग में कितना डिफरेंस आता है तो मुझे वो चेक करना है मुझे बार उसका एक शॉर्ट बनाएंगे नहीं Kimi है अब वो देख लूंगा मैं टाइम मिलेगा जब रिकॉर्ड कर लेंगे एक बार क्या होता है फास्ट हो गया जंप कर दो उसके लिए तो हाँ मैं पहले चेक करूँगा कितना फास्ट है कितना स्लो है मैं एक बंदे बोल दूँ मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा खुद ही बोल दूँगा उसका रिकॉर्ड कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं दौड़नी तू आ जा करीब नहीं तो ऐसे नहीं तेरे को पछा करूँगा तेरे को बस वीडियो दे दूँगा अगर तो पड़ी तो our emblem because for many years you lived among us. Indeed, you all but became one of us. You knew as soon as you saw the letter that we, not Uraka, were the ones speaking to you. It threatened you only because you know what you did. Your own guilt convicted you. For you, Cyrus, are a traitor. You once shared your learning with us, and joined us in our mission to revive the might of Hermanubis, to bring new hope, new opportunity. But then, you betrayed us. You bargained for your independence with your past contributions. And then you left, taking with you Hermanubis' might and the wielder of his power. Okay. We both know what I said to you that day. That as the leader, I grant you permission to leave. But that one day, the sands of time will catch up with you. And when that day comes, you must pay the price you owe. Oh my god. You really know how to hold a grudge. Hermanubis' might? And the wielder of his power? I know. Does he mean you? Professor. The moon is right. I came here once before. He rescued me from the brink of death once, many years ago in the desert. When he learned that I was a scholar, he invited me to come here and revive the might of Hermanubis together. It was a great, daring plan, and one shrouded in secrecy. The Temple of Silence had been bereft of Hermanubis for too long. The strength of its faith, Bamoon proposed that we implant bar fragments, shards of Hermanubis, into the bodies of suitable vessels. If the experiment was successful, many believers volunteered themselves for the experiment. But we soon discovered that the bodies of grown adults could not withstand Hermanubis' power. In the end,
Bamoon offered his own adoptive grandson. और भाई लेकिन कितना पावर है पता है? One other child was identified as a suitable vessel. Yeah. And his parents agreed to release him into our custody in exchange for a small fortune. These two children were our only hope. For many years, the Temple of Silence had been in possession of 2 Ba fragments from Hermanubis. As remnants of his raw power, they were exceedingly rare treasures. The test subjects were sent into a room that had been prepared for the ceremony, and instructed to approach the Ba fragments, whose power had been amplified. If, after some time, this power did not repel them, this would mean that they were suitable vessels. The original plan was for a 3-stage experiment: resonance, implantation, and recovery and observation. The resonance stage went quite smoothly for both candidates. As the 2nd stage began, I realized a decision had to be made. Should we implant the fragments one at a time? This would allow us to monitor the results after the first round and adjust our plan accordingly. Or alternatively, we could implant each fragment in a different vessel at the same time and compare their effects. But as I was deliberating, both Ba fragments suddenly became active. They glowed with a light we had never seen before. I knew that if they were not implanted right away, they would disintegrate and be gone from the world for good. Our 2 vessels had both displayed great promise by successfully resonating with the fragments. Under the circumstances, the thought of implanting both fragments into the same vessel seemed out of the question. To preserve our faith and our power, we implanted each of them with a single fragment. Ultimately, I ended the experiment and left, taking one of the children with me. In recognition of your past contributions, I chose not to send someone to hunt down and kill you both. Your lives were spared, but I have paid a great price for your betrayal ever since. I have always wanted to see you, Sino. Losing you and your Ba fragment dealt us a devastating blow. We've been in decline ever since you left. I see. So that's how I gained my power. Look, in essence, I borrowed your Ba fragment for a decade or so. And now you are seeking justice. If you want to take my life, then so be it. I'm an old man now anyway. But you cannot lift a finger against Sino. He is the General Mahamatra. Your actions would be seen as a declaration of war against the Academia. I'm sure you don't remember anymore, dear Sino, but you've met us all before. You were so young then, when we all gathered around and celebrated the revival of our Lord. You and he, Sethos, you were our final hope. Alright. You'd like me to return? As a follower of Hermanubis, I have allowed this power to remain in the rainforest for far too long. Now, it is time to reclaim it. That power is not yours to reclaim. Sino was chosen by the gods. You cannot take what they have bestowed. You are wrong. Sino was chosen, but he was not the only one. My child, Sethos, has the same gift as he. So those are your terms for freeing the professor? Despise me all you want. My sins are my own. The Temple of Silence is an innocent party. It is because of my foolishness all those years ago that the Temple's glory has waned. And now I must take responsibility for the decision I made back then. So what you're saying is, the power of one Ba fragment is not enough? You're asking me to return the one in my possession, so it can be implanted in him instead? Divine power causes great suffering to those who wield it. How do you know that Sethos would be able to withstand it? He is no longer a small child.
But regardless, this burden is ours to bear. And your objections mean little, given that you turned your back on us long ago. Both my heart and mind are telling me that what you are proposing is a terrible idea. However... Don't listen to him, Sino. That power is no more yours to give than it is his to take. You have to understand. I know. But if this is a question of your freedom versus a fragment of power, then... there is nothing to debate. Sorry to interrupt, but in my view, there are a number of contentions here that still need addressing. Say that Sino refuses to return his power, and you also refuse to release Cyrus. Then, we are at an impasse. I find it hard to believe that you went to all this effort without planning for that possibility. You're trying to gauge where we stand while keeping your remaining cards close to your chest. Well, my stance is, put the rest of your cards on the table. Then we can have a discussion. Wait, those ears. So, we have a descendant of the Valukashuna in our midst. Splendid. Fate smiles upon us after all. Everything we have longed for, Hermanubis will provide. Perhaps this very day we will... Why is he coughing so much? He looks like he's in really bad shape. Moon, you... Take our leader back to his room. Sethos. Grandfather, I know what you wish to say. Leave this in my hands. I don't like to drag out conversations, so I'll just cut to the chase. Had Cyrus not stopped the experiment all those years ago, the plan would most likely have been a success. The wisdom of Hermanubis would have been ours. Still, it's no use talking about what-ifs. We cannot change the past. I'm not like my grandfather. The Temple of Silence has a grand legacy and a sacred duty to fulfill. So it's somewhat inevitable for the leader to have an inflated sense of self. But I see things a little differently. I don't believe the temple has the same stature that it once did. Time has worn away at its prestige and changed things almost beyond... So I'm not going to force your hand. You're all free to leave. Except for Cyrus. My grandfather gave him his chance once. And now I'm giving the rest of you yours. You have courage and wise judgment, kid. I truly wish that the temple would take an objective look at the academia of today. You've been to the city yourself. I'm sure you've seen that much has changed for the better. And things will only continue to improve. Why not consider cooperating with the academia? If you hadn't betrayed my grandfather, I might well be open to persuasion. Tainari made a good point earlier. He said there has to be more to your plan than this, and I agree. All you and Ba Moon are after is the Ba fragment. The professor will accept whatever fate you deem fit for him out of a sense of guilt. I am the one who has a choice to make. And that's how it was always going to be. Ultimately, you want to trade the Ba fragment for the professor, correct? I'm glad to see you're giving it some serious consideration. I won't forsake my professor. Nor do I intend to run from a problem that I must face sooner or later. That works. Oh, my grandfather still has a fair few things he wants to say to Cyrus, so... Are you sure about... I need to think this through. Everyone, let's meet again later tonight. Until then, take some time for yourself. Alright, well, don't put too much pressure. घूमने नहीं रात घूमेंगे हम लोग यहाँ पर कौन घूमे पाएंगे नहीं थोड़े ना और कोई आया था ना
आर्ट फैमिली ब्रो ज्वाइन भाई क्या कर साहिल के साहिल वो दिन से भी खेल रही है आई गेस साहिल का ईद हुआ साहिल करते हैं तीन दिनों में कितने कितने जाए इतना ज्यादा पकड़ होने फिर अरे नो 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 Here he is. छी यार इतनी देर में बकवास हुई लोगों की कुछ पिक नहीं कर रहा क्या अच्छा भाई इनका तो टीम अप भी नहीं है 15 मिनट की बकवास हुई 15 मिनट वापस बकवास सुनो क्या यार कितने दिखा मेरी गधा हूं मेरी Grandfather, the person you wish to see is here. Well done, Sethos. Greetings. Professor! Cyrus! Watch what you— Oh, my Cyrus. Just leave. So that Something. Sino My secret. You're afraid. You I mean, reckon team up you to knew milega. as soon as you saw the letter that we, not Araka, were the ones speaking to you. It threatened you only because you know what you did. For you, but then we both know what I said to you that day. I mean, that as the leader, I grant you permission to leave. But that one day, the sands of time will catch up with you. And when that day comes, you must pay the price you owe. does he mean? The moon is. He rescued me. किसी From से the बता brink दिया of death once. Many years ago in the desert. The moon. अबे पर मैंने तो one कुछ of किया ही the. नहीं For many, the tests up the original as the second, but as I was deliberating, both are to preserve Ultimate. in recognition. I have all. I see. Look. In essence, I borrowed what you kept. I'm sure you and as a follower of Hermanubis, I have allowed this power to remain in the rainforest for far too long. Now, That power is not yours. you are wrong. So those are You despise me all you want. so what you're Divine. He is no longer a small child. both my Don't. I know. Sorry to interrupt. Say that Sino refuses to return. You're trying to gauge where we stand. Wait. Everything we have longed for, Hermanubis will provide. Perhaps this very day we... Why is he coughing? The moon. Take our leader back to his room. Grandfather. I don't like to had Cyrus still. I'm not but I see things a little different. So I'm not going I just think. If you hadn't betrayed my All you ultimate. I'm glad to see you're giving it some. I won't forsake my professor. Nor do I intend to run from a problem that I must face sooner or later. साढ़े के कितने डैश रीसेट हुए हैं Give me one night to make my decision. That works. Then I'll be waiting to hear your verdict. Sino. Oh, my grandfather. Are you sure about negotiating with him? Welcome to the stream. नहीं दे पता नहीं I need to think. All right, well, तुम तो बैठे हुए अपना आर्क खेल रहे हैं बैठ के मस्ती में बोला नहीं है तो क्या करें पे आप आने पे ओके तो पे आप प्रेस कर देते हैं दस बनेगा अरे वाह 10 बन जाएगा रे 10 अरे सर मैं टीम तक खेल रही है झंडू देखें तुमको झंडू खेलते हुए ये रे झंडू का कहाँ झंडू का बात होता कोई सीख गया अभी तक तो आया नहीं होगा कहीं I've taken some time to reflect on this. If I had to guess,
He's a I agree. You've heard all my own. I do. I was still young then, and all I could understand was that there was a strong will inside my mind. The power that came to inhabit my spirit was probably one of the cornerstones of their whole faith. You're not gonna give in to their demands, are you? No, so I will challenge them head on. Kaveh has made similar observations about the desert tribes from his work trips there. I think we could turn that to our advantage. Wow! Looks like we have the same. Turn it back on them now while we still can. Great. अच्छा ये चाहिए नहीं इसका तो मार देंगे चल कर चलो थेरेविनो क्लॉ तो हो रहा है धीरे धीरे अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा देख रहे कि वर्ल्ड बॉस में ये अगर वर्ल्ड दिख गया ना बॉस ये काम आएगा और बन सकता है क्या 10 5 क्या नार्कोटिक 407 नार्कोटिक हाँ तो कम कर पड़ा है कोई नहीं अभी तो Sethos, let's talk. Have you made up your mind? We'll get to that, but first, I have some degree of medical training, so I was wondering if you might let me take a... I have no objections, although we do have our own doctors here. Only one way to find... Follow me. Keep your voices down. We don't want to disturb him. Let's talk outside. Bamoon has fallen into a deep coma, and his prognosis is quite grave. I'm sure that he appears to have sustained a serious injury in his youth, which has been exacerbated over the years by the heavy burden of work, and now by... Regretfully, I must inform you that, based on what I've seen with patients in a similar condition, he doesn't... Yeah. I've known for a long time. You're his heir, aren't you? You clearly have a lot of respect for the man. But you also see things differently. You have a broader range of concerns and a more pragmatic approach. So tell me how we can end this on your terms. Let's find a way to bring all this to a resolution while Bamoon is still alive to see it. That's what really matters to you. I know. Yeah, there's no time to waste here. You know that better than it. You know, the two of you are actually in a very similar predicament right now. Both of you have a very different perspective from the men who raised you. Right. And you didn't create this situation. They did, but somehow you've ended up having to make the tough decisions. You're right. We both look at this problem very differently than the people we inherited it from. I accept, Sino. This all began because of Hermanubis. So let's end it with the rite he himself created. Legend has it that when Hermanubis first arrived in Tuletula, he sparred with the city's residents. He and his two companions proved their mettle by fighting over several days, winning the support of many fine people. That group of supporters were some of the first members of the Temple of Silence, and the sparring matches... Sounds very fitting. As a fellow vessel of Hermanubis, your ties to the Temple of Silence run deep. So I will permit you to participate in this rite, along with your chosen... 3 against 3. Sounds good. However, I have some additional terms. As the challengers, you must win all 3 of your fights to win. And Sino, both of us must put our Ba Letting Cyrus leave with one of the Ba fragments was a mistake, made by my grandfather out of pity. It is a long-standing issue that must be addressed for the Temple of Silence to move forward. I can make no concessions on that front. None needed. We're on the same page. If I win, the Temple of Silence must release Cyrus, and consider this past dispute resolved. If you win, I'll return my power to... It's a deal.
Then let's meet at the ceremony. तो हमारी फाइट हम आ जाएंगे, हमारी फाइट तो नहीं आए हम लोग, पागल पड़ी है। सीधा ही आता फिर तो। Well, after how that went, There never was. you have to win. You need this power. Yeah, that's right! Besides, it stayed with you ever since you were a small child. Surely that's a sign it thinks of you as its rightful owner. Both, yeah. When you put it that way. I've had to overcome a lot to tame this power and claim it for myself. Exactly! The Traveler and I will never lose. And neither shall I. The desert was home to an ancient and great civilization that, for a variety of reasons, fell out with the civilization of the rainforest. It's just as Dia said. Prejudice has pushed people apart. But there must be personal factors at work here too. I can't shake the feeling that Bamoon cares for many more things than he lets on. Tomorrow, everything will be resolved. Tonight. We gather on this day to perform once more the rite of duels with the greatest of... This is our most sacred of representing the Grandfather, you're here. A rite of duels after all these years. I am surprised by your decision. I know what I'm doing, Grandfather. Representing the Academia, the Challenger. Ready. We will fight to have our voices heard. Warriors, take your positions and decide on the order of battle. We come not to debate what brings our challengers here, nor what will become of the defeated duelists. Duelists, the might... Huh? Are you sure? I agree. He's very strong. Sending him... Okay, then you're... Sure. We have decided. So have we. Duelists of the first bout, please step forward. एनिमेशन हमारा एनिमेशन नहीं है। Don't forget, safety first! Hey, you there! You better play nice with them or Paimon will make you regret it! Little bit too much chatter from the audience over there. Audience. Fiber audience को कर दी है। Scatter! वही लॉमा ने कहता मारता है, लॉमा ने मारता है। पर यार, A swift end to the first bout. I now, when you're both ready, let's begin. क्या हम खेलेंगे? Watch out! He drank plenty of water before the bout, so he should be fine. वो मैं नहीं आई क्लाउड फोर वाला। Thus ends the... I'm ready. So am I. This is the final stage of when you're both I am Sethos. For many years, we have kept our covenant with Lord Hermanubis. We earnestly... Now, I will fight. I am Sino, General Mahamatra of the Academia.
student and successor of Cyrus, the sage of Spontamod. I fight in defense of my power, my professor, and you. I think you left some things unsaid. This is a sacred duel, and Hermanubis... Everyone. Old. My grandfather is a wise leader. He is also known to be a ruler who is not afraid to get blood on his hands. I understand, but our faith has held us back for too long. Times have changed. Then I thought of you. Each Ba fragment, I once thought that the nature of our... I am more than just a warrior. Exactly. The name Hermanubis has left its mark on both of us. So show me your answer, Sino. Show me I can be more than my faith. More than the power I wield. Bring it on! That's all you've got? What happened to searching for your answer? अच्छा फाइटिंग में नहीं, फाइटिंग में तो अच्छा है। ओ गिर गया। Fight's over. Do you yield? You won. Well then, looks like you found your answer. I give his glory to you. ये ले गया, लेगा। I've seen that light. That is the light of our Lord, the great Hermanubis, priest over all other priests. His spirit dwells within that lightning, and his will lives on. Once a warrior of Tynar, he emerged from the barren desert sands to serve the god king Al-Ahmar. After the death of the god king, Hermanubis gathered his followers and the Tynarian priests and led them to the city of Tula. There, they founded the Temple of Silence, and from that day forth, we became stewards of all knowledge that survived from King Deshret's civilization. Barely a century passed before war ravaged the desert. One by one, Eremite leaders took up arms against each other in battles that would devour what little remained of their civilization. Only the wise city of Tula was spared under the guiding hand of the Tynarians. But peace did not last.
Coveting the knowledge of King Deshret, the beasts set their eyes on Tule Tula. The king of Gurabad laid siege to the city and ordered the sages to surrender to him the Temple of Silence as proof of his victory. The ruling elite colluded with their oppressors, betraying the temple so as to hold on to their rule over the city. They declared that the knowledge guarded by the temple was the true cause of corruption. These were dark days, and we faced enemies on all sides. Our lord had long since exhausted his strength, keeping the forbidden knowledge introduced by King Deshret at bay. To ensure the temple's continued survival, he broke his being into many pieces and began the ceremony of Hermanubis' legacy, bestowing his power upon his mortal followers. With this power, the temple was able to defeat the tyrant's army. Yet, we were not hailed as heroes. Strange and unfamiliar as this power was, it struck fear into the people's hearts and drove them to reject us. In the end, the people of the temple and the Tule Tula Tainarians left the city for good and made their way to the rainforest. What followed next was inevitable. The elite of Tule Tula fell and were decimated. War engulfed the desert. And we wandered from place to place, always in hiding, all the while keeping close watch over our secrets and staying true to our mission. Betrayal forced us out of the desert and into the forest. Then mistrust drove us from the forest into the desert once more. We have lived in exile for far, far too long. Yet, today, the Temple of Silence has borne witness to the glory of Hermanubis once more. Thank you. How is it? Do you feel... Dead. आकले निकले. Grandfather. Hey, Sethos. I know. I guess you were prepared for this. Yeah. He's been on death's door for a very long time now. At least, he was able to see this chapter. What's next? Per my grandfather's last wishes. The Temple of Silence should submit to whoever possesses the largest number of Hermanubis fragments. But that's never going to work, as I'm sure you realize. I did foresee this possibility, and I gave it some thought. The fact is, I know next to nothing about the staff, records, and environment here. Sethos. I believe the honor, were it not for this duel, or indeed if you had other intentions, the Ba fragments would most likely be in your hands by now. I'm sure Bamoon never meant for anyone but you. I do. Still... Well, Sethos. I would like you to succeed Bamoon as the new leader of the Temple of Silence. You are more suited to the role than I, and I have complete faith that you will be an excellent... But doesn't that render everything that we've been through up to now? No, it doesn't.
This experience has allowed us to become friends, which means that the academia and the temple, that's a much bigger deal than you might think, Sethos. You said... I will try. To be honest, I couldn't have asked for a better outcome. Actually, part of me wonders whether Bamun's intentions from the very beginning was just to create enough pressure to force us towards a duel. That way, no matter who won, one of us would have to surrender our Ba fragment and the power of Hermanubis. Had you won, the Temple of Silence would have doubled its strength. And were I to win, he correctly anticipated that I wouldn't suddenly drop everything to become the leader of the temple. Much less integrate the temple into the academia, but he knew that the temple's future would depend not just on the guidance of Hermanubis, but the support of the academia too. His plan meant that whoever ended up succeeding him, they would have an easier time interacting with the academia. With one... And here I thought that General Mahamatra wouldn't care for all these. You're absolutely right. Thank you for everything, Sino. As a gesture, the Temple of Silence, but you must be... By the way, Tainari, my grandfather was so happy to see you. You are a descendant of the Veluca Shuna, and we are the... The story goes that King Deshret chose the sage Hermanubis from among the Tainarians, and appointed him as his familiar. He went on to fight many valiant battles with the Tainarians who left Tuletula. In all likelihood, those were your ancestors. How fascinating. My father once mentioned that I was named after the Tainarians, but I never knew that my forebears had such a history with the temple. I like this story. By the way... Yes. Cyrus. You'll probably find him in my grandfather's room. He wouldn't show it in front of me, but I think... If it's true that you... Someone's got to make the decisions. I will make a detailed report on all of this to lesser... I'm sure you'll have lots to attend to in the days ahead. If we're going to work I will. All right. See you soon. Come hang out with us anytime. Best of luck, chalo. Come quest kita ya return to academia. जाने Timmy है टूना टीने चलते हैं घर पे पूछिए दो तीन लोग हेल्प करते What were you... Oh, please. What do you mean, a one-man suicide mission? All right. What do you... Okay, look. Tainari's master is really laying into Cyrus. Wow, I haven't... The last time... I think I'll go around and update everyone. We can go for... Makes sense. I'm in. ये आफ्टर पार्टी की बुला रहे हैं Hey, Kale. You're back. Well, look who we have here. All taking... That does not when you run into... Now would not be a good time. You're right. It's not the first time that I've had to talk to you about this sort of thing either. You need to learn that there are times when the right thing to do is get a more experienced member of staff involved. Do I make myself clear? Kale, please do something. He's giving me the signal. All right. Guess it's... Say, Madame Farizan, I can see you're pretty upset, but, I was just wondering, remember that time you offered to give me a tour of... Huh? Wait, did I hear that right? Kale, you remember? Wonderful. Well, of course the offer still stands. Come on. Poor Kale getting dragged off like that. Also, check how Farizan acting like some sort of official... Kale! Cup. Huh? What? Oh! What do you mean, cup?
You need a cup? Oh, it's nothing. Just Master's way of reminding me to stay hydrated while I'm out and about. It's code for let's reconvene at the cafe. Tainari and I used it while we were in school, and it's become something of a family trip. Oh, that's good. Mm-hmm. 2 people left. Let's bring... अरे तो फिर नीचे कूदा है पागल लोग Am I? We're just reorganizing all the... There's no rush. My sincere thank... Yes, with you. I see. And it sounds like they... That they will now as a token of... Yeah, sounds... Sure. उसका कैफे नाम है क्या सर पुष्पा कैफे And then, the Traveler just pounced on their opponent and knocked him right out cold. Then there was Tainari. He put up an amazing fight, too. We ended up winning all 3 bouts. Whoa. A truly... Hey, Paimon included all the juicy details. The Traveler just pounced and then waved their sword like this, then spun around and blocked. Despite winning 3 bouts in a row, you still ceded the position of leader to him. That's very dignified. Of course. I got to be a champion too for once. Yeah. Huge place! It felt like something right out of an epic poem! Imagine this. It was like there was... Maybe... I think that'll do. Shall we stop off at the house? My thoughts exactly. See you around. I should get going as well. See you all later. I need to go say thanks to the Core 30 for their help. Also, Sir NEFFEX says he wanted to introduce me to some of the Academia's work process. Kali's come a long way. Everyone's a work in progress. Yeah, true. तो वरना मत यार बात से आप और की बजेंगे क्या करेंगे क्या इनसे एक और करोगे आ जा गधों से That was good. It feels like everything's... Life is all about these moments when you can finally relax and hang out with good friends after a job well done. Do you 3 have anything planned for the rest of the day? If not, would you come somewhere with me? No. That's a secret. Okay. I think I can guess what you're talking about. Well, नहीं दे मिलेंगे क्या Been a while since I last made my... Need any help? That's a nice spot, isn't it? what a great view! We're so high up... Traveler. Turn around. This is my secret base. Somewhere I only bring my best friends. When I was a student, back then, I had a lot of the same questions that Sethos would. Our gifts help us to find... You two really are like brothers. I feel the same way.
I still remember one time when we came up here to chat and do our homework. That was the one and only time. Nothing will ever... Then make it... Okay. Hey! क्वेस्ट शुरू नहीं हो रही है मेरे से क्या है अरे तो बाहर घर होता क्या देखे थे अब क्या बता रहे हो सब क्या लड़ाई नहीं है Professor. Sino. Just the man I'm looking for. Guess... Some old... Can you put... I was at the academy... Oh, time flies. Look how tiny you are in the... You look like... Ah, it's this one. Yep. Looks like her work, all right. And this. Is there something you'd like to say to me, Professor? Like what? Hey, at moments like this, I can't pretend I'm a good person. But Moon had every reason to despise me. I've dreamt of that place many times after... you've matured so much over the years, I know. Since you're my professor, I should save you some face by not calling you out on all the... Good thinking. Take your own advice. Seriously, why bully an old man like me? Hey, wait. How did I not notice this one earlier? Look how cute. Yeah. Oh. Madam, please. All right, I'll add it to my schedule. Wait, no. Next week is the tomato growing competition. I have... Or you... तो कीपर खत्म हो गया कि यार रिक्वेस्ट अब बाकी लोग हेल्प कर जल्दी अब देखो ऑनलाइन है अभी तो बोला कितना मैं फ्रेंड के लिए गुंगू साहिल और गुंगू साहिल ऑनलाइन नहीं है साहिल भी ऑनलाइन नहीं है अबे यार कैमरा जी चल रहा है ज़्यादा बड़ी क्वेस्ट हो गई यार उनकी हेल्प करवाई थी भी Dinner's gonna burn. Emerge. Order guide you. Right here. Right now. Right here. Emerge. Right here. ना भाई इसको आने दिक्कत है I think cringe best option only. Reading लेना Solidify. पता है मेरे को दिखाया वो है जिधर ये उनको डेटा में कोई दिक्कत नहीं है बैठ के तैयारी छोड़ देंगे
This is... It's getting dark. Locked on. उसको रख नीचे यारा तू तो बदला नहीं है I got him cornered. इतनी हेल्थ भी कम है पता है तुम्हें, बट ना ये जो आल्ट कर रहा है ये भागने भागने वाला है दिक्कत है। Stabilize. Play these souls. अरे तो बाकी की हेल्थ तो मैं मार दे तो करा Gather. इसने किया है। अच्छा मैंने तेरा घर गया हट गया ये टेस्ट का है भाई, हम टेस्ट का है ये तेरा दिखा रहा ना, ये नहीं टेस्ट पहले चला रहा होगा। Solidify. Locked on. Target acquired. Order guide. Solidify. Off we go. To the Lord of the Night. Gather. Your soul in sacrifice. I got him cornered. Forever hold your Stabilize. This is order.
Locked on. कितनी डाउन पड़ता है Time to say hello. क्या पड़ता माइनस EM माइनस तो EM जोड़ होगा भाई अच्छा EM 0 ही है ठीक EM 0 हो जाता है EM तो 0 ही इसका Bow before your king. I got him cornered. The glory to which none can compare. बेटे नहीं या Measly insect. Solidify! I will have order. आई थिंक इतनी रेंज में नहीं आती वो ऐसा फील रहा Target acquired. Stabilize! For the Lord of the Night. Suffice your soul. Tell me what you see. Sacrifice. Forever hold your peace. आई लोग कहने वाला नहीं बड़ी सेवन हुई है उसका कर है यार अब तो अभी बहुत आ गया यार तो इसको ट्राई करना है और इसको ट्राई करना है तो हो गया एक मुझे मिल गया एक मुझे हो गया ट्राई करेंगे बाद में टाइम मिलेगा तो जब कुकी बिल्ड हो जाएगी मेरी जब कंडेंसर बना देंगे कंडेंसर
चलते अभी हो गया हमारा आज का कंप्यूटर गाइड मैं कर सकता हूँ मजे करेंगे थोड़ा और क्या